Hello, everyone. Welcome you all to the Vidyadaan session. We are thrilled to have Mrs. Manika Gaur with us today. Mrs. Gaur brings a wealth of experience to our gathering as a distinguished expert in the art of voice overs. Her impressive career includes role as a former radio jockey with leading commercial radio stations, a talented podcaster, and a versatile voice actor known for her animated voices. With a rich background in audio and video production, creative content, and scripting, Mrs. Gaur has been shaping the industry with her innovative approaches. For the past 8 years, she has been sharing her knowledge as a faculty member specializing in radio programming, advertising, and voiceovers. We are excited to learn from her insights and experiences today. Please join me in giving a warm welcome to Mrs. Manika Gaur. All over to you, ma'am. Thank you so much, Vanshika. It was really a splendid introduction that you gave us. Um, Before I start the session, thank you so much for this opportunity that I'm able to share whatever I've learned through my career with amazing people around the country. And when before I also start, I would like to say that this session is going to be a mix of English and Hindi because a lot of things that I'm going to present here are going to be in Hindi and trainings are going to be there. So for a brief moment, I'll be switching the camera off and will be taking it to my volunteer who will be helping me with exercises and all. So I'll quickly start my presentation because I'm afraid we don't have so much time because there's a lot to learn and an hour is a very less time to cover everything. So let's quickly start my session, which is called The Art of Voiceovers. I'm just presenting my screen here. Just let me know if everything is visible properly. Yes, it is visible, ma'am. Wonderful. All right. So here we are going to talk about the art of voiceovers. What is voiceover exactly? It is expressing a script, something which is written in a text through your voice. That is the art of voiceover. A production method where a person records their voice in order to tell a story or convey additional information. And how will this additional information come? Through the emotions that are there in your voice. The script which has to be read out or performed in a certain manner जिससे आपकी कहानी जो आप बताना चाह रहे हैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो सामने आए audience is not able to see the actor. I am a voice actor and I am just not visible to people. It's just the acting which has to emote everything out. So they have to hear my words, they have to listen to my words to understand. A VO artist also uses his voice to give an additional context, elevate an already exciting narrative, जिसको आजकल पता है क्या हो रहा है मशीन लैंग्वेज यूज हो रही है मशीन वॉइस ओवर यूज हो रहा है कई जगह but what I feel personally is the machine voiceover doesn't have that human touch. It doesn't have emotions. And it cannot help you recall something. Because if we just think of an ad, एक line है जो मैं बोलूंगी men will be men. It takes us to a certain ad, a video advertisement. But if it's a machine language, it will not recall that ad, right? It has to be spoken in a certain manner with certain emotions to bring back the recall back. So that is what a voice actor, a voiceover artist does with their voice. Let's quickly go back to some history of voiceovers. So the first instance of a voiceover comes back in 1900. Reginald Fessenden, he was the inventor of voiceovers in a way. He did weather report over telephone. So that was the very first voiceover which people have a record of. And in 1928, Walt Disney, you've heard of him. He was an animation film producer, a pioneer. Mickey Mouse का जो voice था, that was the first animated voice that came in the world. Now, what are the kinds of voiceovers that the voiceover industry has? Animation, cartoon films, हमें पता है, we have seen Doraemon, we have seen Shin-chan, we have seen a lot of animated voices that people, present.
Then there are commercials. Commercials are the advertisements, audio ads, which run usually on radio, and video ads that we see on television or are streamed online. So these are the commercials. Narration of documentaries, like we have on Nat Geo Discovery. Then we have another section called audiobooks, which are basically books read out. Audio drama, multi character dramas are there. Then there's a different genre called e learning. E learning has training videos, tutorials, explainers, they come under e learning. Dubbing is an industry altogether. There are films that are dubbed in multiple languages. There are series, documentaries that are dubbed in multiple languages. So that is dubbing, where you mute the original sound और उसके ऊपर जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, वॉइस एक्टर्स हैं, वो डब कर. पैरा डबिंग लोग बहुत कम जानते हैं इस बारे में, एंड इट इज इन अ वे नाउ एन एंशियंट आर्ट, नॉट एंशियंट लाइक एंशियंट टाइम्स, बट इट्स एन ओल्ड आर्ट. पैरा डबिंग में यूजुअली क्या होता था कि जो ओरिजिनल वॉइस है किसी की, उसको पूरा म्यूट नहीं किया जाता, उसको हल्का सा दबा के, उसका वॉल्यूम कम करके, उसके ऊपर दूसरी लैंग्वेज में उसको डब किया जाता. For example, I get a, I'm for just for example, I'm working in a news channel, और suddenly मेरे पास आता है एक video where there's a small bite by president of a certain country, and that bite is in a language which my people don't understand. So what I'll do is I'll quickly lower down the volume and have a male artist just paradub. So this is the minute difference between dubbing and paradubbing. Coming to IVR, interactive voice recordings. That's also an industry that voiceover artists are quite engaged in, because IVR is almost everywhere now. हर phone के company में IVR होगा, television company में होगा. Even if you call an airlines, there is an IVR. So IVR is everywhere. Thank you for calling. So that particular line is IVR. We are going to act out all these things at the very last. So keeping the best for the last, I am just going to explain it right now. There are announcements on railway stations and airports. And then there's another industry, which is the rising and faring industry, the podcasting. So these are the kinds of voiceovers that usually are common. And voiceover artists are usually doing all these things to be in the VO industry. Okay, so there's a myth buster that we have. People say कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं व्यूज नहीं कर सकता या नहीं कर सकता. बट ये सरासर गलत है. ये इसलिए गलत है कि जरूरी नहीं है कि आपके वॉइस का टेक्सचर या क्वालिटी बहुत अच्छी हो वॉइस ओवर करने के लिए. जरूरी है कि आपकी आवाज में रेजोनेंस हो, डेप्थ हो, आपका पेस ठीक हो, आपका प्रोजेक्शन ठीक हो, एंड यू हैव an understanding of the script, an emotion that you can take out from your body through your voice. So it's absolutely not an essential thing to have a great voice quality, khanakdar awaaz ho, ya ekdam clear ho. You can even have a Rani Mukherjee type husky voice and become a great VO artist. We have seen artists who have a husky, distorted voice, but yet they are one of the most famous artists in the country. So those people who think that भाई मेरी आवाज अच्छी नहीं, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, forget about it. If you know, understand, believe, you can definitely be a good voiceover artist. So what is essential for a good voiceover? I'm not saying a good voice, an impressive voice. An impressive voice can be any voice texture, which includes voice modulation, voice clarity, उस लैंग्वेज पे कमांड जिसमें आप बीओ कर रहे हैं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, स्पेनिश, फ्रेंच, एनी. आप अगर उस लैंग्वेज को जानते हैं तो आप उस लैंग्वेज में वॉइस ओवर कर सकते हैं. डिक्शन. अब डिक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो चीजों से बना होता है. हम इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड पीपल व्हाट डिक्शन इज. सो आई विल टेल माय सेल्फ. डिक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी. मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो और उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी आती हो, दैट मींस आपका डिक्शन अच्छा है. तो डिक्शन अच्छा होना चाहिए. एंड द लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
विच इज ब्रेथ कंट्रोल। आपके सांस पे जब आप बोल रहे हैं, आपका कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू हैव ब्रेथ कंट्रोल देन आपके सेंटेंसेस टूटेंगे नहीं। बिकॉज कई बार स्क्रिप्ट्स में लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम, ब्रेथ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? वॉइस मॉड्यूलेशन अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग होता है। वीडियो के लिए एक वीडियो आर्टिस्ट ज्यादा मॉड्यूलेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां ऑलरेडी पिक्चर्स चल रहे हैं आपके पीछे। अगर आप ओवर मॉड्यूलेट करोगे तो वो पिक्चर्स पे से ध्यान हट जाएगा, आपकी आवाज पे सारा ध्यान। सो इन ऑर्डर टू हैव अ गुड वीडियो वॉइस ओवर, you don't have to have quite अगर आप डिस्कवरी देख रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, you'll see that the voice over is very subtle. It's the pictures that play me. In audio it is different. In audio we need to modulate, जैसे हमारी स्क्रिप्ट है। हमारी स्क्रिप्ट हो सकता है न्यूज स्क्रिप्ट हो, अगर न्यूज की स्क्रिप्ट है तो हमें उसको बस रीड आउट करना है। हो सकता है वो एक इमोशनल पीस हो, तो हमें उसमें इमोशनल्स डालने हैं। हो सकता है वो एक ह्यूमरस पीस हो, तो हमें अपनी आवाज में वो टोन लेके आनी है, वो क्वालिटी लेके आनी है कि वो चीज अच्छा साउंड करे और फनी साउंड करे। एंड इन एन आरजे लिंक, जो आरजे अपना जॉक टॉक बोलता है, एंड इन अ पॉडकास्ट इट्स यूजुअली अ कॉन्वर्सेशनल टोन, बिकॉज वेन यू आर एन आरजे you're talking to your friend, you're talking to one person, you're talking to the mic through which you're communicating to the entire world or the entire country or the city. So that one mic is your friend. आप उससे बात कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है या आप क्या बताना चाह रहे हो। पॉडकास्ट ऑल्सो, पहले क्या होता था, पॉडकास्ट यूज टू बी ओनली ऑडियो, but now we have podcasts in videos as well. So again, we see that there's proper conversation happening in podcasts. So it's nothing dramatic when you are an RJ or a podcaster. It's proper conversational tone that we are using. Coming to how to get command over language. So command over language and diction comes through reading. हम लोग जब से इस ऑनलाइन दुनिया, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, ड्रामा, स्टोरीज के बीच में फंसे हैं, हम लोग ने पढ़ना छोड़ दिया। पर्सनली मैंने रीडिंग छोड़ दी है। इट्स बिन ages that I've picked up a book and read. So reading is very important. न्यूज़पेपर्स आते हैं, वो पढ़ना चाहिए। उसमें हमको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, हर लैंग्वेज के। अगर हमने दिन में एक नया वर्ड सीख लिया, सो वो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज ही करता है। देन सेकंड वे इज टू लिसन। हम दूसरों को सुन सकते हैं जिनको हम आइडियल मानते हैं कि हाँ, this person has a very good Hindi or a very good English or any language. So हम उनको सुने, उनका किसी शब्द का उच्चारण देखें, प्रोनाउंसिएशन देखें, और उससे हमें पता चलेगा कि इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। बैक इन द डे when I was learning, so I used to watch DD पे news, and we had these awesome news anchors who used to have that perfect generalized Indian English accent, जिससे एक एक वर्ड का pronunciation clearly it used to come in the, and that's how we learn, because we are Indians basically and our mother tongue is, mine is Hindi, and people have Bangla, Punjabi, Marathi. English is a language which of course अब हमारे, हम लोग ने imbibe कर लिया, but it is not a language that we always have. So listening is very important. And understanding the rules of linguistics. Linguistics is a study of languages. अब ये किसी एक लैंग्वेज की स्टडी नहीं है। लिंग्विस्टिक्स इज जनरल स्टडी ऑफ द वे लैंग्वेजेस हैव कम, वे वी प्रोनाउंस, वे वी आर्टिकुलेट, कैसे हमारी लैंग्वेज बाहर जाती है, कैसे हम बोलते हैं तो लोगों को सुनाई देता है, हम जब बोलते हैं तो वो एक एक अक्षर, एक एक साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो फोनेटिक्स होती है। एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर फोनेटिक्स, जो हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है। एंड देन करेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको कोई आपसे बड़ा या कोई जो आपसे ज्यादा जानता है आपको करेक्ट कर रहा है, तो बड़े हम्बली उस करेक्शन को मान लेना चाहिए। मेरे साथ क्या होता था कि जब मुझे कोई करेक्ट करता था तो आई यूज्ड टू से, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड, व्हाई वुड एनीवन करेक्ट मी?
But then correction and taking that thing to work on yourself is very important. तो जब कोई आपको बताए कि ये ऐसे ठीक करना है, so let's just forget it, understand कि हाँ शायद ये सही बोल रहा है, let me imbibe this and that's going to improve you only. ये एक बहुत बड़ा इशू होता है which I used to have in the beginning of my career, but then I worked on it और थोड़ा सा अब better हो चुका है लाइफ में. So this is how we can improve our language and our diction. Then these four P's are very important in doing a proper, nice voiceover. Pace. So अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं, हर स्क्रिप्ट का पेस अलग होता है. इट डिपेंड्स कि वो स्क्रिप्ट क्या है. अगर वो एज आई सेड न्यूज है तो वो ठहर के पढ़ा जाएगा. अगर वो इफ इट्स एन एड तो एड की रिक्वायरमेंट अलग होती है. मे बी इट्स अ फास्ट पेसिंग एड तो उसको तेज पढ़ना पड़ेगा. अगर वो कोई और स्क्रिप्ट है जिसको आपको और थोड़ा सा रोते रोते पढ़ना है तो थोड़ा धीरे पढ़ना होगा. पिच की बात करें तो पिच भी कंटेंट पे डिपेंड करता है. आप अगर ऑडियो ड्रामा कर रहे हो और अचानक से आप युधिष्ठिर का कैरेक्टर कर रहे हो तो आप बहुत धीरे बोलोगे. युधिष्ठिर वॉज धर्मराज युधिष्ठिर, सो उनका कैरेक्टर थोड़ा सटल होगा. वहीं अगर आप दुर्योधन के लिए बोलोगे तो दुर्योधन थोड़ा चिल्ला के बोलेगा, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलेगा. सो रावण बोलेगा तो वो अट्टहास के साथ हंसेगा. तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो या कौन सी स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर. प्रोजेक्शन, थ्रो ऑफ योर वॉइस. सो प्रोजेक्शन जब हम अपने वॉइस ओवर का माइक पे, अपने वॉइस का माइक पे करते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कि हम अगर लाउड हो रहे हैं, हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो हम माइक से थोड़ा पीछे हो जाएं ताकि हमारी आवाज माइक में जाके फटे नहीं. अब मुझे बोलना है तो मैं माइक के इतना क्लोज नहीं बोल सकती. अगर मैं इतना क्लोज बोलूंगी तो मेरी आवाज पीक करेगी और उसको बाद में एडिट करने में दिक्कत हो. और अगर वही मुझे कुछ विस्पर करके बोलना है, मासूम रातों की तन्हा पकड़, सो मैं आके थोड़ा सा माइक के पास बोल. एंड पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू नॉट लूज द ब्रेथ. तो यूजुअली व्हेन वी गेट इन स्क्रिप्ट तो हम उसको पहले पढ़ते हैं. पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि अगर कोई लंबा सेंटेंस है तो उसमें हमें किस जगह ब्रेक लेना है, और जहां पर ब्रेक लेना है वहां हम एक स्लांट लगा देते हैं ताकि जब हम फाइनली अपना टेक दे रहे हैं तो हम वहां पर पॉज दें. It's an effort that you have to put before doing the voiceover. So just be prepared with the script with proper pauses and everything. ठीक है. Then breath control की जो मैं बात कर रही थी. So breath control is important and you can only control your breath when you are in a relaxed state. अगर आप थके हुए हैं या आप भाग के आ रहे हैं, आप you are your palpitation is high, obviously आपकी breath lose होगी, you'll fall short of breath. तो प्रॉपर वॉइस ओवर्स करने के लिए फर्स्टली आप अगर कहीं से भाग के आ रहे हो तो बैठ के थोड़ा सा अपने आप को काम करो, उसके बाद यूज करो. जब भी हम कुछ बोलते हैं, so there are certain organs of speech which are involved. These are the organs of speech that are involved in articulation of every sound that we make. Even अगर हम बोल रहे हैं तब भी हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं उस साउंड को. वह वो भी इसी से आ रहा है, इसी से, यहीं से आ रहा है. अगर हम ट बोल रहे हैं तो वो यहाँ से आ रहा है. अगर हम म बोल रहे हैं तो वो यहाँ से आ रहा है. So in order to have a relaxed pace, you have to have all these organs really, really stressed. Alongside deep breathing exercises, अनुलोम विलोम अगर हम कर लें, थोड़ा सांस ले लें, बैठ के ठहर जाएं, तो बहुत हेल्प होगी ब्रेथ कंट्रोल. This is voice production physiology. This is how we produce sound. अब एग्जैक्टली ये अगर हम देखें तो हमें बायोलॉजी क्लास लग रही है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली बायोलॉजी क्लास. दिस इज प्रॉपर ऑडियो प्रोडक्शन. कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये वहां से स्टार्ट. सो अब साउंड जो ट्रैवल करता है, इट ट्रैवल्स थ्रू एयर. सो इट इज द सेम एयर दैट वी ब्रीथ इन फ्रॉम हियर. ये हमारे डायफ्राम तक आती है, और जब हमारा डायफ्राम से एयर बाहर आती है इस रास्ते से, तो इन सब की मदद से साउंड प्रोड्यूस होता है. वो साउंड क, ख, ग, म, प, ट, क, न, कुछ भी हो सकता है. और जब हम ये अलग अलग साउंड बोल रहे हैं तो हम नोटिस करेंगे
कि हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, हमारी टंग अलग अलग प्लेसेस पे टच कर रही है, कभी अपर पैलेट पे, कभी लैरिंग्स पे, कभी टीथ रिज पे, कभी दांत पे, कभी we are closing our lips to produce sounds. So these are all organs of speech which help us articulate properly. Voice quality क्या अच्छी होती है? Again, it's not the sound that I'm talking about. The voice quality, the desired one that we are talking about is थोड़ा deep voice होना चाहिए. Deep voice हर किसी का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको अमिताभ बच्चन टाइप का बैरिटोन चाहिए. No, even a shrill sounding person can have a deep voice. And to find your own pitch and pace जिस पे आपको वॉइस ओवर करना है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है एंड जो अनस्ट्रेस्ड, वो देन वॉइस क्वालिटी आपकी बेटर हो सकती है सिंगिंग से, हमिंग से एंड खुद को सुनने से. अगर हम खुद को सुनेंगे तो वी विल बी एबल टू करेक्ट आवरसेल्व्स. और हम खुद को कैसे सुन सकते हैं? अगर आप म्यूजिक रियलिटी शोज देखते हो तो आपने देखा होगा कि जो सिंगर्स होते हैं यूजुअली अपना एक कान बंद कर लेते गाते हुए, वो ये सुनने के लिए कि उनका करेक्ट सुर लग रहा है या नहीं. तो इफ यू विल क्लोज बोथ योर ईयर्स एंड देन स्पीक, यू विल बी एबल टू लिसन टू योरसेल्फ एंड दैट्स व्हेन यू कैन करेक्ट योरसेल्फ. व्हाट इज वॉइस क्लैरिटी? वॉइस क्लैरिटी इज एब्सेंस ऑफ मम्बलिंग. मम्बलिंग मतलब मुंह ही मुंह में बोलना. हम जब बोलते हैं तो कई बार हम बोलने के लिए थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या नॉट श्योर होते हैं अपने आप के, तो हम मुंह ही मुंह में बोल जाते हैं. जैसे मैंने ऐसे बोल दिया, किसी को समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलने जा रही हूँ, किसी को समझ नहीं आया. सो दिस वॉज मम्बलिंग विच आई जस्ट डिड. मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स. पहला वर्ड खत्म नहीं होता कि मेरा दूसरा वर्ड स्टार्ट हो जाता है. टॉकिंग टू फास्ट, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी बात तपाक से खत्म हो जाए. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. मुझे लोगों से बात नहीं करनी, तो मैं बहुत जल्दी बोल के आई गो. ड्रॉपिंग द लास्ट वर्ड इज अनदर थिंग फॉर वॉइस ओवर्स. जब हम एक वीओ आर्टिस्ट हैं एंड वी आर परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट, द फर्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड आर इक्वली इंपॉर्टेंट. थैंक यू फॉर कॉलिंग tatvacreations.com. Doesn't work. Thank you for calling tatvacreations.com. Establishes my company's name. Right? So it depends कि आपको पहला और आखिरी हर वर्ड को स्टैब्लिश करना है टू बी हर्ड. स्क्वीकी वॉइस आती है जब एक आवाज हो जाती है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड टू गेट अ डीप एक्सरसाइज. अक्सर हमने सुना है कि सिंगर्स भी बोलते हैं, आर्टिस्ट भी बोलते हैं कि हम पेट से गाते हैं या पेट से आवाज निकालो. आप गले से बोलते हैं, गले से तो सभी बोलते हैं, बट डीप आवाज के लिए आपको पेट से बोलना पड़ेगा, वेयर इवन योर डायफ्राम इज इन्वॉल्व इन स्पीकिंग. हाउ वी गेट दैट? Let's do some exercises and we'll get that. So I'll briefly close my camera and I'll change the camera position so that my colleague Shen can help us with some exercise. Just stop sharing this for a minute. Position yourself so that you're properly visible. I think we need the camera here. No, at a place where. Yes. No, no, I need it. There. Yeah. Shen, just go a little back. Yeah. So is Shen visible to everyone? Absolutely. And hi, Shan. Hi, Shen. She's saying hi. I have my Oh, earpods, so it's not audible for him. Yeah. So what we're going to do right now is to understand how we can get a deep voice. जो मैं बोल रही हूँ ना, पेट से आवाज आनी चाहिए.
तो पेट से आवाज कैसे आएगी? जिन लोगों ने थिएटर किया होगा, आई थिंक दे कैन रेजोनेट विद दिस, कि थिएटर में भी जब हम वॉइस प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे साउंड नहीं करना चाहिए, ऐसे, ऐसे डीप वॉइस, ऐसे साउंड करना चाहिए. सो शेन विल स्टार्ट. We'll start by putting our feet a foot apart, this much. And अभी शेन क्या करेगा? इंसान सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स के बाद, अपने बच्चों के बाद, अपने स्पाउस से पहले किसको प्यार करता है? खुद को. So Shen is going to hug himself. Hug yourself, Shen. He's hugging himself, and while he's hugging, he'll put head, his head a little down. सो अभी हमारा आइडिया क्या है? खुद को रिलैक्स करने का, सो दैट हमारी आवाज भी रिलैक्स रहे, हमारी पेट से आवाज आए, एंड आवर बॉडी डज नॉट हैव टेंशन. क्योंकि अगर हमारी बॉडी में टेंशन होगी वो हमारी आवाज में. सो वी वांट टू अवॉइड दैट. तो शेन, हग योरसेल्फ. You are the best person in this world, and you love yourself the most, right? Okay, now he will put his head down. Then he put his shoulder down. Head is going to be the first thing that goes down. Shoulder, and then धीरे 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 itna. That's it. So there will be strain here, but, and the legs, knees can bend. Knees can bend. We are not stretching, we are relaxing, right? So Shen, now loosen your hands. Just loosen them. Let them hang like this. Exactly. Is he visible? Yes, absolutely he is. Yeah. So he's just hanging his hands like this and then move sideways. ऐसे. वहीं खड़े होके just ऐसे. Just play with yourself. ऐसे. ठीक है? So just relax and just be easy. Now slowly we have to get up again. So the way you went down, first your back. Keep hug yourself. Hug yourself. First your back comes up. Then your shoulders come up. And then your neck comes up. And enough of self-love, you can free yourself. अब कुछ बोलो. Hi everyone, how's everything going? I am not sure if that was audible, but to me this sound was coming iske tummy se, not from the, not from his, Not from my neck. not from the throat, not from the throat, but from his stomach. So that's the voice we need. That's what theater artists also do. There's another exercise that theater artists do. It's called wheat and sack. So उसमें क्या करते हैं? Another volunteer, Sony, please come here. उसमें they stand back to back, it's like this, and they lock their hands. ठीक है? And then pull the person. You don't pull me. You'll not be able to. So इससे क्या होता है? This bag gets relaxed. So when these things are relaxed, thank you Shen and thank you Sony. Thank you so much. So when these things are relaxed, your your breathing is fine, and your body becomes relaxed. And once that's relaxed, your voice is relaxed. So I'll present the screen again. That's so incredibly engaging for the students, I can see. I'm And sure. there are a lot of, students sparking up with a lot of questions. So Oh let me know wow. when I can ask it. You wanted me to ask all the questions at the end or just right now? We'll do that in the end, I believe. Let me Perfect. just finish with the presentations that I have of the sound and Perfect. the voice. So this is a booth where we do voiceovers. On the left is a proper voiceover studio. On the right is a booth that you can take home. आप घर पे इसको लेके अपना सेटअप लगा सकते हो. It's not very costly and it is cost effective as well, which is one and the same thing. Okay, so happy voicing, guys.
But before happy voicing, I'll do some voicing for you so that you know what's the difference between the pace and everything. Animation हम सबसे last में करेंगे. Before we do animation, we have other things. Just open my scripts. Now we talk about ads, radio ads or video ads. So उनका pace certain होता है. Even I am a little out of breath right now, so let me also take a deep, deep breath so that I can continue with this. Yeah. So let's first do the commercial. Radio or audio ads, or even for that matter, जो हमारे video ads होते हैं, they are in a certain section. First उनका body होता है, then उनका call to action होता है. So body is read out in a different manner and call to action is done in different manner. So when we go to call to action, here is the ad. Adventureland. Thrills, spills, and excitement await. Roller coasters, water slides, go-karts, arcade, food court. Book your tickets now on adventureland.com. Adventureland, where memories are made. So that's an audio script, right? So the first style was the body, and then the last call to action was Adventureland, where the memories are made. So that's spoken in a more established manner. Then let's go to a documentary. So documentary usually बड़ी subtle होती है. उसके पीछे आपके जंगल होते हैं, बंदर होते हैं, animals होते हैं. ये वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज है. देन देयर आर अदर डॉक्यूमेंट्रीज लाइक डिजास्टर डॉक्यूमेंट्रीज, जिसका मेरे पास अभी एक सैंपल है. आई रीड इट आउट. अर्थक्वेक पे बना है ये. सो जस्ट इमेजिन पीछे पूरा, close your eyes and imagine that there's a scene where you see earthquake के after effects, and then there's this sound coming. There was no time to flee. The earthquake hit without warning. In just a few seconds, the entire city was flattened. The humanitarian workers had boots on the ground in just a few hours. They were the only ones who were prepared for a disaster of this scale. In the coming months, thousands of lives were saved, and communities were rebuilt from the ashes. That's how documentaries are narrated. Coming to audio drama. So I explained audio drama का script थोड़ा सा twisted होता है, so I don't have it right now. But then audio drama में, for example, महाभारत का audio drama है. Radio पे आजकल these audio dramas are, even podcast में you'll have audio dramas happening. So you can listen to any of the audio dramas and understand कि उसमें character आपको लेना पड़ता है. At times when I am doing an audio drama, I am doing multiple female characters. तो सबकी आवाज अलग होनी है, सबका style अलग होना है. There's a lady who's 70 years old. There's a lady who's 20 years old. So that after reading the script and understanding the character, you can do the audio drama. Coming to e-learning, e-learnings are usually training modules या फिर किसी आपके घर में कोई डिवाइस आती है, उसके साथ एक लिंक आता है और YouTube का और anywhere where there will be a tutorial for that particular device. And also e-learning में we have course books. CBSE does it, NCERT does it, ICSE does it. So these are all e-learning. So इसकी एक script का मेरे पास sample है. I'll do a part in English and Hindi both. This is for an imagined brand of UPI payments called Pay1. ऐसा है नहीं कुछ, but we've just made it. Gone are the days when you had to stand in long queues or visit multiple bill collection points or sign up on so many biller websites or apps to pay your utility bills. Presenting India Pay1 that helps you to make all your bill payments such as electricity, telecom, DTH, gas at one place, anytime, anywhere. So this is e-learning. इसमें इसके बाद पूरे steps हैं कि how you will download the app, how you will log in, register, and then how you can pay. So it has the entire process. So this is e-learning. हिंदी में इसका है, वो दिन गए जब आपको अपने यूटिलिटी बिल्स का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था.
so on and so forth. So it's एंटायर कि आपको क्या क्या करना है, डाउनलोड ऐप कीजिए, उसके बाद रजिस्टर कीजिए एंड द स्टेप्स ऑन फॉर. Then we come to dubbing. As I said, dubbing, I think we have discussed. Dubbing में ये होता है कि एक फिल्म है या सीरीज है या स्क्रिप्ट है, सॉरी स्टोरी है, जो कि दूसरी लैंग्वेज में है और उसको इंडियन लैंग्वेज में या हिंदी में या किसी रीजनल लैंग्वेज में डब करना होता है. प्रभास की डबिंग एक बहुत फेमस टेलीविजन एक्टर ने की है. हिज नेम इज शरद केलकर एंड ही हैज बिकम फेमस एज प्रभास वॉइस. सिमिलरली जो हमारे हॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, डबिंग इंडस्ट्री में वी हैव डेडिकेटेड वॉइस आर्टिस्ट फॉर वन एक्टर. सो वो भी हमारा तय होता है कि कौन, अगर ब्रेंडन फ्रेजर है तो उसकी डबिंग कौन करेगा, कियानो रीव्स है उसकी डबिंग कौन करेगा. सो वी हैव डेडिकेटेड एक्टर्स फॉर देम. यू कैन चेक इट ऑन विकिपीडिया और एनीवेयर यू विल अंडरस्टैंड. देन कमिंग टू पैरा डबिंग आल्सो आई एक्सप्लेन. एक इंटरैक्टिव वॉइस का एक सैंपल सुनते हैं. Welcome to Tattva Creations. For English, press 1. For Hindi, press 2. Please wait while we connect you to one of our operators. That's how IVRs go. Announcements. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. कालका से चलकर प्रयागराज के रास्ते हावड़ा जाने वाली गाड़ी संख्या 1200-302 कालका मेल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ रही है. ठीक है. So this is how we hear on train station. Now coming to animation that we said कि हम last में गए. So there's this short conversation between how many characters I think you'll have to guess. आवाज से. There are siblings and their pet parrot. ठीक है. So ओहो, फिर से instant noodles, इतना boring. तुम्हें नहीं खाने तो मुझे दे दो ना. हाँ, तुम्हारे तो हर चीज के नखरे हैं. केविन, क्या तुमने मिट्टू को हरी मिर्च दी? मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम दे दो ना तान्या. क्यों ना मिट्टू को नूडल्स दे दे. नो, मिट्टू को भी नहीं पसंद. क्या तुम आइसक्रीम खाओगे? So that was a short conversation in animated. So I think I'm good to have the question answer session now, and I hope you liked this short. I mean, it could have been a longer session, but short session on voiceovers. It's amazing to hear such diverse range of voiceovers from you. As a layperson, it's clear just how complex and skillful this art form is. So let me just land on to all the questions that students are asking now. The first question is, ma'am, what is the difference between dubbing and voiceover? Very interesting question. So dubbing is a voiceover. Every dubbing is a voiceover, but every voiceover is not dubbing. So dubbing is a kind of voiceover. We usually dub by muting the original soundtrack of the film or the series that we are dubbing, and we just act out in different languages. A very important thing in dubbing is that you should know how lip sync happens. So while you are dubbing, you have to be very careful and look at the screen all the time. And जहाँ पर ओरिजिनल फिल्म में पॉज है, आपको वहां पॉज देना है. जहां पर ओरिजिनल फिल्म में वो लगातार बोल रहे हैं, आपको वहां पॉज. सो बेसिकली योर डबिंग एंड द लिप सिंक शुड मैच. दैट कम्स विद प्रैक्टिस. पहली बार में नहीं होता, मुझसे अभी भी नहीं होता. ऐसा happened. All right. So I think the next question is whether acting skills are also an important element of voiceover as there are different kinds of emotions required. Absolutely, absolutely. So I'll just give you a anecdote from back in the day when I was just starting radio. That was 2007. So I had a mentor who was pretty senior and very. He's a legend. He was a legend rather. He's no more. So I consider him as my first mentor.
his name is Ayaz Khalid, and he was based out of Lucknow. He told me, I was initially when we were doing voiceovers for commercials and everything, I was a little skeptical, a little hesitant of the people around me. So he told me just this thing, Manika, think that you're alone, act as per the script. Because if you will not act through your body, your voice will not act. So yes, acting skills are quite important. If you're doing, voice acting drama, then it's important. With e-learning, you can be a little at ease. With documentary, you can be a little at ease. It's just a voice that modulates. But with characters, your body has to act. तभी वो feel आए. Right, that's a great answer. I think, okay, so the next question is, how can a voiceover artist develop the unique voice? So, like I said, pitching बहुत important होती है and projection बहुत important होता है. So, basically, with a unique style, you can have a unique voice. मतलब वॉइस तो यूनिक होगी अगर आपकी वॉइस क्वालिटी ऐसी है, टेक्सचर ऐसा है, बट विद अ सर्टेन स्टाइल इन you can make it sound unique. For example, if you listen to Vidya Balan, she's an amazing voice artist. Before being such a famous actor, she was a model and she was a very, very acclaimed video artist. She has a style of using a little seduction in her voice when she does voiceovers. अच्छा, आपने मुझे नहीं बताया. So something like this she has in her voice which makes it unique. So it is a style that you can develop of your own. जैसे actors होते हैं, धर्म जी has a style, हेमा जी has her style. So वो अगर आप style develop कर लो and use it, definitely you'll have a unique, identifiable style and voice. Interesting. So one of the student is asking, I also want to become a voiceover artist. Can you please tell me the steps to be one? So I think Abhi, the steps that I've told you, firstly, you have to make sure that your command on the language is impeccable. Your voice exercises are, on ground. I'll give you some exercises as we speak. So when you have some, there's a tip. This is a tip for a slurred voice. Basically, हम सुबह उठते तुम्हारी आवाज बहुत सोई सोई होती है. So बस उसके लिए हमको ये करना है, हमको सीधे बैठना है, हमको सोचना है हमारे आसपास कोई नहीं है और हमको बस ये करना है. बार बार करते रहो, आपकी टंग खुल जाएगी एंड देन इट विल इम्प्रूव योर वॉइस वंस. सेकेंडली, जैसे अगर वो बोल रहे वॉइस ओवर आर्टिस्ट उनको बनना है तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मैं क्या करती थी, whenever I used to travel in a metro or in a bus or anything, जो होर्डिंग्स लगे होते थे ना वो रीड आउट करती थी तेज तेज. आई नेवर यूज टू केयर कि मेरे पास जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, सोच रहे हैं क्या है ये, क्यों बोल रही है, शी मैड और समथिंग. आई नेवर यूज टू केयर. सो अगर रास्ते में मेरे लिखा हुआ है पंसारी की दुकान, तो मैं उसको बड़े स्टाइल से पढ़ती हुई जाऊंगी, so that I am practicing it. So practice is also something very important. If you think you can stand in front of the mirror and start reading out, start articulating as if you are actually recording. एंड करते 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 आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी. एंड सुनने से भी, लिसन टू अ लॉट ऑफ वॉइस, लिसन टू e-learnings, listen to animations, you will definitely learn. There's one similar question coming out that what advice would you give to someone looking to start a career in voice acting? Voice acting particularly. Yeah. So उसके लिए again, like you have to firstly अपने से रूबरू करना है उस वॉइस एक्ट को जो आपके अंदर है. और वो तभी रूबरू होगा जब आप उसको एक स्क्रिप्ट लेके आईने के सामने खड़े होकर उसको बोलना स्टार्ट करें. And then if you really, really think that you want to pursue this line seriously, I'm sure there are many academies available that can help. So you will have people, a seasoned VO artists who have their own academies. You can join them and learn the art. But practice आपको ही करनी. And the other question is, which condenser mic is best under 5K, ma'am? Well, ये तो brand promotion हो जाएगा अगर मैं अभी if I give go. See, it depends आप कहाँ पर view कर रहे हो. If you're doing it in your room
on अपने ही घर में कर रहे हो and you don't have any acoustic treatment around, any unidirectional mic can work. यूनिडायरेक्शनल माइक से क्या फायदा होता है? इट ओनली कैप्चर्स द फ्रंट. अगर माइक मेरे यहाँ है तो ये सराउंड साउंड नहीं आएगा. बट इफ यू टेक अ मल्टी और अ बाई डायरेक्शनल, सो आपका इको आएगा जो आपके अनअकूस्टिकली ट्रीटेड जगह से. Then, if you are able to acoustically treat it, just if, for example, if you are facing this wall, so put a acoustic foam here. Put your mic here. Itna dur. Keep it a foot length away from your face. Test multiple times कि वो कैसा sound कर रहा है. And how will you test? You will record it, or you will do a USB directly on a recording software, and you can take a feedback. कैसा sound कर रहा है. So a lot of learning by doing, but of course, if you can take any expert's advice, you can do. But I suggest initially start with a unidirectional, but don't go for the mics that are on the headphones, the ones that are used in call centers. Don't go for that. Take a proper USB, and they are all under 5. I don't want to do brand promotions, but yeah. Makes sense, And the one I absolutely. have is 2.5. Yeah. Quite safe, quite safe. So, the last question is that how do I analyze if I am a fit for this career? By giving it a shot. No, no, no. That's of course one thing, by giving it a shot. But then, firstly, you have to become confident in yourself that you can do voiceover, and that comes with belief. That comes with all the things that I mentioned. Face projection, good, good, decent projection, voice quality, understanding of the script, understanding of emotions. If you're able to do that, you have modulation, you have articulation, then you will definitely be a good fit for this industry. I think it was my bad. I said that that's the last question. The queries are still coming out, and one of the question is that how can aspiring artists be better prepared for the realities of the industry? Rejections are a part of the game. So competition is everywhere. If there is one script, there are 10 artists. So it's just that you have to give it your best. And what I also tell my students and what I also tell my colleagues is that you just have to believe in yourself. If that belief is strong, you can fight everything. Failures will be there, rejections will be there, but how many? Something somewhere is made for you. So when you hit that one, the first thing goes, um, things start after that. So I resumed my voicing career after a 3-year gap with a small paycheck that came to me after I think auditioning for at 5-6 studios, and I got it for one e-learning website का छोटू सा module. Somehow the client liked my voice, and that's when I started with those 3K का check था वो छोटू सा, but those 3K were huge for me because it was kind of getting into the voicing industry again. And I think I celebrated it even more than what I got when I got my first salary. So rejections will be there will be blocks, but definitely once it's done and it's crossed, there's no looking back. That's so true. And who is the voiceover artist behind the Chhota Bheem voice is also the question coming out. Uh, I'm not sure actually. I'm not sure what the name is. We can Google it, I believe. That's a question we can definitely Google. Really No, not that. sure who the voice is. All right. So I think let me just see. Okay, so I think the questions are over. And the best thing that I learned from you is, of course, never look back. The past is a place of reference, not a residence, is all what I learned from you. So Right. I think thank you for being a part of today's session, ma'am. We are I'm so grateful glad. for, you know, your insights into the world of voiceovers, your demonstration of different voiceover styles, ranging from animated characters to commercial, has truly showcased the depth and versatility of this craft.
We appreciate your time and expertise in illuminating the many facets of voiceover work for our viewers. So thank you so much. I think I enjoyed a lot. And the way the questions are coming, I can see the viewers have enjoyed a lot. So thank you so much. It's Thank you. my pleasure. Totally my pleasure. Thank you so much for this opportunity. And I'm glad and I'm so happy. I'm sure people must have learned at least one thing. And I think I've gotten a little smile on their faces. So this session is a success At for least me. as a layperson, I've learned a lot, and I think I was not aware of this kind of any form. But now today, I'm gonna just look after myself and my voiceover skills then. Of course, of course. Thank you so Thank you so much. much. Thank you.